Good morning, students. Myself, Mrs. Sapna Gautam, Science teacher, Savit Kari Vidya Mandir Fazilka. Students, how are you? Chapter last में cell structure and function में we have studied about all topics related to cell chapter, cell structure, cell shape, size, and how cell is discovered, and how can we explain the structure of cell and make cells are grouped together, make tissue, then organ system, and all these topics, plants and animal cell में difference, all topics related to previous chapter we have studied. Okay, so our next topic is chapter 9, reproduction in animals. Reproduction in animals means to say how animals reproduce and what are the main methods of reproduction that occur in animals. Let's study in today's video. Okay, first of all we will study about definition of reproduction. Reproduction means the process of giving birth. The process of giving birth to their young ones of their own kind, means to say अपनी ही तरह के बेबीज़ को जो बर्थ देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सम एनिमल्स गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स एंड सम बाय गिविंग बर्थ. Okay, so human beings giving birth to their young ones of their own kind. So this process is known as reproduction. अब reproduction की importance क्या है? तो what is the main importance of reproduction? Let's study. This term is important for the continuation of species. Continuation of species on the earth means to say अर्थ पर स्पीशीज़ का continuation चलता रहे, उनका वंश आगे आगे चलता रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन देयर इज़ नॉट अकर देन स्पीशीज़ विल स्टॉप एट एन एक्सटेंट. किसी हद तक वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी और उनका कॉन्टिन्यूशन विल स्टॉप, ख़त्म हो जाएगा और वंश आगे, न्यू जनरेशन विल नॉट कम. ओके, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इज दैट क्लियर? तो व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन तो हमने कह दिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने ही तरह के बेबीज़ को जब एनिमल्स बर्थ देते हैं तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन. और ये ज़रूरी भी है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थ पर स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है. तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ओके, एंड नाउ वी विल गोइंग फॉर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो व्हाट आर मेन मोड्स? कौन से वेज हैं जिनसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं? तो देयर आर मेनली two modes of reproduction. First is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. Okay, so in today's video we will discuss about sexual reproduction. What is mainly
sexual reproduction and what are कि how sexual reproduction occurs in animals. तो let's explain. Sexual reproduction means in which the reproduction in which male part and female part both are involved, and male part, female part when fused together then they form zygote, and term is known as fertilization. That all terms we will study about in today's video. So first, sexual reproduction. क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट हाउ मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन क्या होते हैं? मेल ऑर्गन्स जो मेल में पाए जाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक टेस्टिस, ये पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ओके, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट. That are the main male organs that found in male. And female organ, ovary, oviduct and uterus. So these are the main female reproductive organs that found in females, and these are mainly male reproductive organs that found in males. But how they involve in the process of sexual reproduction? Let's see. Testes produce sperms. Testes, male reproductive organ, produce sperms, and sperms को we can say male gamete. We can say male gamete, and ovary, female reproductive organ that produce ova. Ova or ovum we can say means egg. Egg produce करते हैं, that is female gamete. Okay. So testes, male organ, produce sperms, that is also known as male gamete, and ovary, female organ, reproductive organ, produce ovum, egg भी बोलते हैं इसको, that is female gamete. When both are fused, means to say how? When we talk about sperms, then it has tail, middle part, and head. When sperm enter, sperm क्या है? Male gamete. और विच ऑर्गन रिलीजेज स्पर्म्स? टेस्टिस. और टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन.
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से स्पर्म्स निकलते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, व्हेन दे रिलीज फ्रॉम टेस्टिस एंड egg, that is ovum. Ovum is egg, or when ovum releases from ovary. Ovary क्या है? Female reproductive organ. When ovum release from ovary and sperms release from testis, then they will join together. But how? That is process of fertilization. When sperms enter with ovum, when sperms enter with ovum, then both nuclei will join together, sperm and egg. Both nuclei, that is single cell structure, and ovum is also single cell structure. When both cells are joined together, are fused together, then they will make zygote. They will make zygote. ये क्या बना देगा? ये इस तरह से दोनों न्यूक्लियाई जुड़ जाएंगे और ये zygote बना देगा. And this process is known as fertilization. Fertilization. In the next video, we will study about male reproductive organs diagram also. Okay, and only introductory parts we will study in. We are going to study in this video कि what are mainly male reproductive organs and sperms, egg, ovum, and what is meant by fertilization. When zygote formed, that this process is known as fertilization, and these all things you have studied in 7th, 8th class also. But I will clear you more efficiently, more clearly all these topics. Okay, so these topics I think have you cleared? Okay, and next, female reproductive organs, like this is oviduct. Oviduct. Oviduct is also known as fallopian tubes. Fallopian tubes. इसको fallopian tube भी बोलते हैं. ये oviduct होती है. And this is uterus, or this is ovary. A pair of ovaries found in female reproductive organ, or that is female reproductive organ. Okay. In female reproductive organ, we can say there is 3 mainly parts, like fallopian tube, oviduct, ovaries that produce ovum or egg, and uterus. यूट्रस की वॉल में एम्ब्रियो जो होता है वो आगे आपको समझाएंगे, वो एम्बेडेड होता है, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, दैट इज एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस. दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोस और ऑनलाइन क्लास ऑल्सो. ओके, तो when sperm enters in the fallopian tube, in the oviduct, then what happens? When sperms released from testes, which is male reproductive organ, then enter in the female reproductive organ,
ओविडक्ट में जब एंटर करता है तो स्पर्म और एग, स्पर्म और एग, then they fuse together and will make zygote. zygote बना देते हैं और इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियोस. तो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर, you have to learn all topics properly and draw neat and clean diagrams also in your notebook. Chapter 8, chapter 9 are very important for you for your higher classes. Okay, and if you have any doubt, then Thursday, Friday and Saturday you may ask any doubt questions, then I will clear you. Okay, thanks. Have a nice day.